Good evening. Aj, as the topic has been stated, we'll have a different look at as to how, as an officer, once you retire, once you have completed 20 years, 30 years, or maybe even more of your engagement, what you can actually do as to, you don't need to, ये जो एक अजीब सा माहौल बना दिया गया है कि कॉर्पोरेट्स ये चाहिए, ये स्किल, ये सर्टिफिकेशन. I mean, what is actually the need for all this and how to come out of this mold and how to make sure that इस सब के बावजूद all of us as people who have served, all of us as people who have a lot of self-respect are able to have a much longer, happier, healthier, dignified life and a life which you build, a life which you create and a life which has a lot of respect. So इसके ऊपर we have just put our thoughts today and this would be a small discussion. Once I complete my part, then we'll open the forum for discussion. It won't be a question answer. We can discuss among ourselves. So I'll just start with a small presentation. In fact, it's just some pointers and I'll share my thoughts. So this is something we can say kind of topic for today or the thoughts for today. First point I would like to tell you is that let's control our egos. As service officers, it is imperative we understand that it's not what we are. हम लोग ऐसे नहीं हैं. ये बताया गया है, ये हमको अभी तक we have been given a lot of doses of egos from outside and we are made to constantly compare ourselves with maybe corporates. In fact, we are made to compare ourselves with our own community people, our own brethren, our own officers who are now in the civil कि यार वो तो इतना पैसा कमाता है, वो तो इतना करता है, those kind of things, which is absolutely not required. Let's control our ego. Let's understand that it is our ego which makes us do a lot of things, which makes us chase and try and do a lot of things in the short run. And that is where it is not required. When I say that, what I'm trying to say, in the short run, you don't need to compete, compare with anything. You have to first start with shedding your rank. And when I say shedding your rank, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो ranks ली, उसको जो हमने serve किया, जो the fact that we served the nation, we served the organization, नहीं. Shedding your rank is you don't need a rank to validate who you are. You serve proudly. You have a rank which is yours, but that's something which is something private which is yours. We don't need to put it on display. We don't need to seek respect from others just for the fact that I carry a rank. Please do carry your rank in the sense that you should use it, but don't carry it in your thought process. Don't carry it within you. And why it is important? Because जब आप बाहर आते हैं, आप बहुत सारी respect सिर्फ इस चीज के लिए चाह रहे हैं लोगों से that they should respect you for the fact that you have been a services officer. No, sir. No, ma'am. You have been a services officer. You were given that respect when you were doing that work. Now you have finally completed your terms of engagement. Let's come outside, explore more. What is there outside? Seek new connections. Understand how the outside world works. Create more meaningful fellowship. Let's have more friends outside. Let's have friends outside the uniform in the civil world. And you'll be surprised when you start speaking to them. They are people who actually want to associate with you in different capacities. They are the people who want to have conversations with you. They are the people who want to develop working relationships with you. They do understand that you have been people who have done a lot, who are quite capable. The problem is they don't understand exactly the kind of work you have done or what you are possibly capable of. Because अभी तक फौजी की इमेज वही है जो मीडिया ने लोगों को दिखाई है, which is either we are one of those hard macho Rambo kind of an image or else the party image. The fact is that very few people really understand that इतनी बड़ी organization है, वो बिना डेली रूटीन, बिना रेगुलर काम, बिना एक एक
कंपार्टमेंटलाइज्ड डिपार्टमेंट्स, प्रोसेसेस, सिस्टम्स के बिना नहीं चल सकती है. बट आवर जॉब इज नॉट टू एक्सप्लेन इट टू देम. आवर जॉब इज टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ फौज वर्क्स. जब आप 10, 20, 30 साल एक जगह रह लेते हैं तो आपके दिमाग की अंडरस्टैंडिंग्स वही है जो आपने देखा है. Now you have to become curious to understand how the world outside works. What are the similarities between us and them? What are the dissimilarities between us and them? और यहाँ बार बार आपकी ईगो आपको सामने आएगी. अरे यार, आई एम अ कर्नल, आई सर्व फॉर 30 years. ये 35 साल का बंदा मुझे क्या बताएगा, या ये क्या मुझे बताएगा जो एक मेरी सोसाइटी में रहता है, जो किसी कॉर्पोरेट में काम करता है. आप कहीं छोटे शहर में चले गए तो वहां तो आपके बराबर के स्टेटस के लोग वैसे ही बहुत कम मिलेंगे. सो आपको और ज्यादा नीड फॉर शेडिंग योर ईगो इज देयर जहां तक हो सके. एंड दैट्स समथिंग विच इज एप्लीकेबल टू ऑल सर्विस ऑफिसर्स. और मैं ये इतनी लंबी फिलोसफी इसलिए कर रहा हूँ सो दैट द नेक्स्ट पॉइंट्स व्हेन वी स्टार्ट डिस्कसिंग द एक्चुअल थिंग्स व्हिच नीड टू बी डन, देन दिस फ्रेमवर्क इज गोइंग टू हेल्प यू. सो स्पीक लेस, लर्न टू स्पीक लेस. फौजियों का प्रॉब्लम क्या है? दे नो अ लॉट एंड देयरफॉर दे वांट टू टेल एवरीवन अ लॉट. देखो हम कितने स्मार्ट हैं, हम कितने काबिल हैं. एंड देन दे टेंड टू स्पीक अ लॉट. बोलते जाते हैं जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ. सो दैट्स हाउ यू हैव टू स्टार्ट योर journey or process of coming out, and not going to corporates, not going to anyone for asking for work, resume, ये सब नहीं, जरूरत ही नहीं है. We first start working on ourselves, understand that we as officers are good, sufficient, capable. जो अभी तक किया है वो बहुत ज़रूरी और बहुत कायदे का काम किया है. बट उसके लिए मुझे एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं चाहिए. उसके लिए मुझे किसी से कंपैरिजन्स करके नहीं बताना है. चाहे वो मेरा फौजी भाई है जो बाहर जाकर के आज से 5, 7, 10 साल पहले गया क्योंकि वो मुझसे सीनियर था, या उसने चॉइस किया और वो अब जाके कुछ कर रहा है, वो उसकी चॉइस थी. सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, वी विल हैव टू now change the frame of how we think. सेलिंग फ्रेम से बाइंग फ्रेम पर आना है. मैंने से सेलिंग फ्रेम मतलब अभी तक आप जितना भी बातचीत people do in terms of wanting to go out of forge and then seeking a career outside, there's a selling frame कि मैं इतना अच्छा हूँ, मुझे ये नौकरी दे दीजिए, मैंने ये स्किल्स, ये सर्टिफिकेशंस किए, मुझे ये नौकरी दे दीजिए, मैंने ऐसा किया, मुझे ये जॉब दे दीजिए. All that is a selling frame where you are trying to tell how good you are, and therefore you should be given a certain job, and along with that job there should be a certain salary. Now we'll shift this to a buying frame. We'll shift it to the frame कि ये काम देखिए मैं करता हूँ, ये काम मैं कर सकता हूँ, इस काम के बदले में इतना पैसा जनरली सब लोगों को मिलता है. Let's see what we can work out on. And then next is coming from a profit frame to a cost frame. When I say this profit to a cost frame, please understand. अभी तक जितनी भी बार आप देखेंगे, 80% of the officers who want to go to the corporate setup or the civil setup, what are their opportunities? Their opportunities are mostly in bigger cities. Bigger cities है तो उनके पर खर्चों के प्रेशर है. They are constantly worried about the fact कि इतने बड़े शहर में रहने का खर्चा, इतने बड़े शहर में फैमिली के एक्सपेंसेस, इतने बड़े शहर में कम्यूटिंग के एक्सपेंसेस. So you are constrained to ask for higher salaries. You are constrained to ask for, and why is all that? So that you're able to adequately maintain a lifestyle which befits your status. Now let's put it to a cost frame. What if you are able to lower your cost of living? So that means you are now living a life where your standard of life is maintained. You have a similar standard of life which you deserve, which fits your standard, but the costs are lower. How do you reach that lower cost ka frame? The lower cost ka frame in practical terms, stop looking at these established and जो top के 6-7 शहर हैं, for example NCR or Bangalore or Hyderabad or Pune, or these are, or Mumbai, and these are all those modern economy based cities. आज से 20-30 साल पहले फौजी अफसर जरूरी नहीं कि रिटायर होकर के इन जगहों पर रहते थे. They absolutely had no need because they were not looking at corporate employments. So
if they were not looking at corporate employments, there actually is no advantage in settling in any of the big places. Tone down, if you're not living in a bigger place, if you're not living in a place like Delhi, most of the times you'll be surprised to know you don't need a vehicle. आपको बड़ी गाड़ी की जरूरत ही नहीं है. That means आपको गाड़ी की भी जरूरत नहीं है, in fact, at times, because your local commute is very easy and you're able to manage by much more easily available public transport in relative comfort. जरूरत है भी तो शहर इतना छोटा है कि आप छोटी गाड़ी से मैनेज कर सकते हैं. All these things. So cost of real estate comes down. If you're not living in a place like Gurgaon or Noida or Bangalore or Hyderabad or any of those places, if you're in a smaller city, say if you're in a place like Indore, if you're in a place like Vizag, if you're in a place like Lucknow, your real estate cost is almost 70% of what it would be in in the metropolis. If your vehicle ownership is of a smaller vehicle, your vehicle ownership cost and fuel cost and usage cost would be lesser than what it would be in a bigger city. So this is how you come from a profit frame to cost frame. I'll reduce my costs of living. I'll go to what is essential. Now, being essential does not mean कि आपको गंदे तरह से रहना है, आपको अपने को अच्छे से मेंटेन नहीं करना है, आपको अपना एक एक लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन करना है, बिल्कुल मेंटेन करना है. आपको अच्छे से रहना है. स्प्लर्ज, इंडल्जेंस, ऑपुलेंस, इस सब की जरूरत नहीं है. मितव्ययी बनना है, कॉस्ट को कम करना है. And you have to have your creature comforts, you have to have decent living, you have to have a decent vehicle, but that does not mean you are just wasting money trying to compete with your you know people who are there in bigger cities, because their ways of earning money are different vis-a-vis the way you have earned money. As a service officer, maximum money which I've earned till now has been based on a salary, and there too you have been an honest person, lived a life of honesty and integrity. To stop comparing yourself with people who are, either working in the corporate since the age of 2023 or who are doing some kind of a business, more so in bigger cities. There is no point. We work on the cost frame. Implication being cost frame में कैसे? Three important things. One, reduce the cost of the real estate you own for your own living. अगर आपको घर की जरूरत है 3 बेडरूम की, बिल्कुल रही है 3 बेडरूम में, बट ऐसा कहाँ लिखा है कि वो 3 बेडरूम आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पर ही चाहिए? वो 3 बेडरूम आप जयपुर में जगतपुरा में जाकर रह सकते हैं, या भोपाल के अंदर कैंट से 8 किलोमीटर दूर ले सकते हैं, या कोची के अंदर ले सकते हैं. द सेम 3 बेडरूम विल कम टू यू एट 80 lakhs, 90 lakhs. So you have almost saved 30-35%, which gives you that much more money in your hands to be able to do a lot of other things which are important. Similarly, if you are not required to commute 1 hour for your work every day, probably either you don't need a vehicle, और चाहिए भी तो आप एक छोटी गाड़ी से काम चला सकते हैं. आपका इंश्योरेंस कॉस्ट कम, आपका मेंटेनेंस कॉस्ट कम, आपका फ्यूल कॉस्ट कम. Overall, you'll realize that these things, they add a lot to your cost of simply of living. Then क्रिएचर कंफर्ट्स, छोटे शहरों में आपको हेल्पिंग हैंड्स कंपैरेटिवली इजी मिलते हैं, कॉस्ट उनकी कम होती है. एंड नाउ डेज दीज स्मॉलर सिटीज दे ऑल्सो हैव adequate and well built modern houses. So now you're not running behind corporate रिज्यूमे भेज रहे हैं, बना रहे हैं. इनफैक्ट वो खर्चे भी आप कम कर रहे हैं. आपको ना आपको एजुकेशन लेने की जरूरत है, नहीं अब आपको वहाँ जाकर के सीपीपी और साइबर सिक्योरिटी या 45 की उम्र में 25 साल के बच्चों के साथ में जाकर के एमबीए करना. ये सब आप कर किस ले रहे थे? साबित करने के लिए कि मैं कितना काबिल हूँ. भारत सरकार का कंपटीशन निकाला, 30 साल नौकरी करी, 25 साल नौकरी करी, आपकी काबिलियत ही आप दुनिया को साबित करते रहे? नहीं. अब जो करेंगे उसी के अंदर दिखाएंगे कि हम कितने काबिल हैं. सो हमें किसी को प्रूव नहीं करना है. वी आर गोइंग टू बी सो गुड दैट पीपल कैन नॉट इग्नोर यू. एंड हाउ विल डू दैट, उस पर नेक्स्ट आएंगे. दैट्स द नेक्स्ट स्टेप. बट वी विल कम फ्रॉम अ सेलिंग फ्रेम टू अ बाइंग फ्रेम. हम अब अपने आप को बेचने के लिए कॉर्पोरेट में नहीं रहेंगे. हम अपने काम को करना शुरू करेंगे. क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, उस पर और 5 मिनट 2-4 मिनट में चर्चा करते हैं. और प्रॉफिट फ्रेम मतलब बहुत सारा पैसा कमा ले, उसकी जगह कॉस्ट फ्रेम पर आएंगे कि अभी जितना है उतने में कैसे मैनेज कर सकते हैं, ताकि किसी से और पैसा मांगने की जरूरत ही ना पड़े. माइंड फ्री हो जाए एकदम. नो स्ट्रेस, नो टेंशन, नथिंग.
मितव्ययिता एक गुण है, आप इस पर काम करेंगे. You'll have to learn to manage and squeeze, and then see how free you become. Now we'll come to next. मैंने कहा शहर, भूल जाइए. आपको किसने बोला कि आपको हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर, एनसीआर में रहना है? ये मेरे ऐसे किसी ने समझाया आपको? किस लिए समझाया? क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ आपको बढ़िया नौकरी मिल जाती है जी, यहाँ का रियल एस्टेट आपको ग्रो कर जाता है. और बट किसी ने आपको इसके साथ की अटेंडेंट प्रॉब्लम बताई? किसी ने आपको ये बताया कि अगर आप आज गुड़गांव में 1.5 करोड़ का घर लेते हैं तो आपको ऑफिस जाने में आपका डेली का 1 घंटा लगता है, आने जाने में आपको 2 घंटा लगता है. अगर आप बैंगलोर में आउटस्कर्ट्स में घर लेते हैं, बिकॉज आज आप वहाँ खरीद भी लेंगे 1.5 पौने 2 करोड़ में, इससे क्लोज आप नहीं पहुंच पाएंगे. प्राइम रियल एस्टेट वहां पर 10 करोड़ रुपए का मिलता है जो आपके ऑफिस के पास में है. सेम काइंड ऑफ अपार्टमेंट 4 करोड़ का मिलेगा. तो इसका मतलब आप एक ऐसी जगह रहेंगे जहाँ से आप डेली 1 घंटा तो सिर्फ आने जाने का लगता है. 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, 2 घंटा रोज का इज 14 आवर्स, विच इज प्रैक्टिकली स्पीकिंग 2 वर्किंग डेज. उसके बाद आप वेट कर रहे हैं कि मैं सैटरडे संडे हो तो शायद अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचूं. So who told you that you have to stay in NCR or Bangalore, or someone like me who marketed the idea of you staying in one of these cities? The fact is, what you need is a good, modern, well-built accommodation and a tier 2 city. What you need is a good broadband connectivity so that you're connected to the world the way we are connected to the world. अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप सब मेरे से बातचीत को सुन रहे हैं. This is all with respect to technology. It has got nothing to do with where you are, where I am. You, because you're service officers, so you need a can, and that's a requirement which is given. Look for cities where there is a good, well-sized cantonment, at least a div, if not a core, probably a command, or the equivalent of the same in the Navy or the Air Force. जहाँ आपको इस तरह का कैंट सपोर्ट हो, उस तरह के शहर. फिर कल्चरल फिट. से फॉर एग्जांपल, आई एम अ नॉर्थ इंडियन, बॉर्न एंड बॉटम इन नॉर्थ इंडिया. मेरे लिए आज बहुत सलूब्रियस होते हुए भी शायद मैसूर में जाकर के रहना would not be very comfortable. But I am, I'll be okay in terms of being able to live in either of the North Indian cities, which could be North or Central India, Jaipur, Allahabad, Lucknow, Bhopal, Indore, because I will find my kind of language, my kind of food habits, my kind of festivals. I'll not be out of place in terms of the people who live around me. Find a cultural fit. Then assess your health and see the medical infrastructure. Generally speaking, if you're a service officer, as such कोई challenge नहीं होता है. You are a fit individual. जो भी आजकल टीयर 2 सिटीज हैं जहाँ एक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ ठीक ठाक से हॉस्पिटल्स हैं. जिस भी शहर की 20-25 लाख से ज़्यादा की आबादी है, वहाँ ठीक ठाक से हॉस्पिटल्स हैं. फिर भी अगर आपकी कोई पर्टिकुलर, आपकी आपके फैमिली में किसी की कोई एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, विच इज if you need a specialized, some kind of a specialized care, then probably find a city where that kind of a specialized care is needed. Otherwise, any city where you have good tertiary uh, medical care should fit your bill. And finally, reasonably priced real estate. That's very important. Don't pay money just for, because it's been marketed loudly. No, pay money for the house in which you are going to live and which is going to serve you and your family well from your dwelling purposes. I would state some cities, बाकी आप लोग खुद भी देख सकते हैं. टॉप ऑफ द लिस्ट 5-7 है. नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया की बात करें तो जयपुर, भोपाल, लखनऊ, इंदौर. साउथ इंडिया की बात करें तो वाइजैक, कोची, मैसूर. ईस्ट इंडिया की बात करें, सिलीगुड़ी. So these are some of the cities which we feel are good cities for you to look and find reasonably priced real estate. Your movement costs are low, and your overall cost of living is such that you can easily manage in your existing finances of your pension plus the other things. Now we'll come to the next point. Now I would say, what is this slide about? This is a slide about the fact and about the kind of work which has not been explored, which people are not looking at right now. I would call it the 1525K club. And why 1525K club? हम यहाँ से शुरुआत करेंगे अपने
सेकंड करियर की, आई डोंट इवन नो व्हाई पीपल कॉल इट सेकंड करियर। हम यहाँ से शुरुआत करेंगे बिकॉज हमने अभी तक एक काम कर रहे थे वो कंप्लीट कर दिया है, वो हमारी एंगेजमेंट्स कंप्लीट हो गई है। अब दूसरा प्रोजेक्ट शुरू हो गया है विच इज नाउ यू आर नॉट इन यूनिफॉर्म एनीमोर। सो क्योंकि हम शुरुआत करेंगे तो शुरुआत छोटी होगी, शुरुआत बेसिक से स्टार्ट होगी, शुरुआत के अंदर थोड़ा सा रास्ते बनाने में, संपर्क बनाने में, कॉन्टैक्ट बनाने में समय लगता है, काम धीमे धीमे बढ़ता है। इसलिए मैंने इसको 15 to 25 के मतलब महीने का 15 से 25 हज़ार रुपये क्लब बोला है। ये ना सोचें कि यही सच है जिंदगी का। 15 से 25 हज़ार रुपये का मतलब है यहाँ से आप शुरू करेंगे, आप कहाँ तक जाएंगे वो आपको भी नहीं पता है। इसमें अब आप क्या क्या कर सकते हैं, दिस इज where you will realize that by not looking beyond the corporate, by not looking beyond the kind of jobs which are available, उनसे उस फ्रेम को ही हटा दीजिए। आप खुद क्या कर सकते हैं उस फ्रेम पर आइए, because you have not realized what you are capable of, you have not realized what you can do. So there are a lot of things which you can do which will very easily fetch you starting, and I'm taking a pause here and I'm repeating that it will start you within 15 to 25k rupees per month, which is not a small amount of money. If your establishment costs are zero, if your setup costs are zero, and the investment you are making is yourself, आप खुद को इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ से आप इसको बढ़ाना शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल नॉलेज बेस्ड वर्क, आप बहुत सारा नॉलेज बेस्ड वर्क कर सकते हैं। जैसे जैसे उदाहरण के तौर पर आपने अगर 30 साल गवर्नमेंट की नौकरी करी है, यू नो हाउ a lot of SOPs can be made, you know how a lot of office procedures can be done, you know how a lot of billings can be created, you know how a lot of organizations can work. आप एक बार के लिए फर्ज कीजिए कि आप भोपाल जैसे एक शहर में जाकर के बस गए, वहां पर पीथम सॉरी नॉट पीथमपुर, देर आर अदर स्मॉलर इंडस्ट्रियल एरियाज नियर बाय, देर आर वेरी स्मॉल फैक्ट्रीज, 50 करोड़ 100 करोड़ सालाना टर्नओवर के बिजनेस। Those businesses cannot afford to employ an armed forces officer, but you can go offer your services. And since you are offering your service to one person, you can offer it to 10 people. Don't even ask for money initially. उनकी चीजें वैसे ठीक करने लग जाएंगे। 2-4 महीने आप उनकी मदद करेंगे, उनको समझ आ जाएगा कि आप कितने काबिल, कितने काम के आदमी हैं। वो आपको पैसा देंगे। वो आपको 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए नहीं दे सकते, बट वो बहुत आराम से आपको 10 हज़ार 15 हज़ार रुपए देने लगेंगे। धीरे 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 और लोग जुड़ते जाएंगे। Second, almost all army officers can be teaching people. A lot of you are engineers, a lot of you are have done ह्यूमैनिटीज के अंदर आपने पढ़ाई की है, आपने स्टडी लीव लेकर के बहुत सारी पढ़ाई करी है। सो यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ being able to coach, teach in these smaller towns. There are a lot of opportunities where you can start doing that work. You can include students to come to you. शुरू में पैसा कमाएगा बट आपका काम जो है शुरू होगा चलने लगेगा। If you are one of those ones who has done MTech, who has done MBA, then you can actually coach people on cracking these entrance exams. You can नहीं है, मान लीजिए आप मेरी तरह से कम पढ़े वाले बच्चों में से जो 12th के बाद से आर्ट्स ग्रेजुएट हो गए, still you can go and teach students in 8, 9, 10 standard, help them prepare for their board exams. सुनने में ये बहुत कम लगता है, बट जब इनके अंदर स्केल आने लगता है, ज्यादा लोग आने लगते हैं, आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई सेटअप कॉस्ट नहीं, आप अपने घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, एंड यू आर अर्निंग, यू स्टार्ट अर्निंग डिसेंट मनी। ऑल दीज प्लेसेस आई नेम्ड से भोपाल, इलाहाबाद, लखनऊ, वाइजैक, कोची, Jaipur, all these are state capitals. Jodhpur, a lot of these places have decently sized legal firms, advocates जो बहुत ठीक ठाक से established advocates होते हैं, accounting firms. आप उनसे जाके मिलिए, आपको बहुत सारा काम आता है. You can help them in terms of drafting, researching, preparing their cases, and you'll be surprised they'll pay you money once you start doing work with them on a regular basis. थोड़ा समय लगेगा, 2-4-5 बार 2-4 लोगों से, और they'll be more than happy to meet you. आपके लेवल का आदमी उनके पास मिलने नहीं जाता है, and they definitely cannot afford someone like you. And you don't need to have a chartered accountant's degree, you don't need to have a lawyer's degree for doing these works. These are knowledge based work which you already have. You probably do not have a formal degree,
I'm not saying don't acquire the degree if you want to do that kind of a वर्क, बट आप यहाँ बहुत सारे लोगों को सर्विस दे करके आप एक तरह के आप सर्विस मैटर्स के अंदर वहाँ जयपुर के 5 सीनियर एडवोकेट्स को पकड़ लीजिए और उनको उनके केसेस के अंदर उनकी हेल्प करने लगे. You'll be surprised you can do this while sitting anywhere, even for advocates who are working in AFT. So the point I'm trying to make here, there is a lot of knowledge-based things you can do. You already know a lot of things. All you need to do is split it into understand who can take that knowledge from you and do it. Important being, don't do it for free. Even if it is at a smaller amount of money, that's okay. Don't do it for free. Why I'm saying this is because the day you start doing it for free, you'll stop getting respect from people whom you want to do it for. चलिए, आपको knowledge based काम नहीं समझ आता, product based काम कर लीजिए. There are a lot of people who are quite capable of producing things. I met an officer, and some of you might be knowing him also. He is in Mau. He superannuated. He made a beautiful home there. His house he has a dog there. And then once while speaking to him, he took me to his garage. उनके garage में he had around 50 aquariums. I asked him, sir, what is this? He acquired this hobby of creating aquariums, and now over a period of time, I assume I have not been in touch with this officer for a very long time. बट आई थिंक वो शायद उन एक्वेरियम्स को सेल भी कर रहे होंगे अब. और आज के टाइम में तो बहुत सारी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हैं. अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इतने सारे ऑनलाइन चीजें, आप कुछ भी कर सकते हैं. आप होम बेस्ड कोई भी बिना कोई खर्चा किए आप बेकरी का काम शुरू कर सकते हैं, चॉकलेटियर हो सकते हैं. शेड योर रैंक, यू विल बी एबल टू डू एनीथिंग. just need to shed your rank, just need to understand there is dignity of work, there is dignity of labor. मैं किसी को प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, उस प्रोडक्ट के बदले में मुझे पैसा दे रहा है. तो इसलिए मुझे आपको अगर अपनी रैंक वाला काम करना है, नॉलेज बेस्ड काम कर लीजिए. आपको रैंक वाला काम नहीं करना है, आप बहुत आराम से कोई प्रोडक्ट बेस्ड काम कर सकते हैं. कोई लंबा चौड़ा खर्चा करने की जरूरत नहीं होती है. आपके पास ऑलरेडी ओटीजी होगा, आप बेकर बन सकते हैं. आपके पास ऑलरेडी चॉकलेट बनाने का काम कर सकते हैं. मैंने बताया आपको एक्वेरियम का काम किया. बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से बहुत सारे काम करते हैं. एंड दे स्लोली बिल्ड अ वेरी वेरी हैंडसम लार्ज dedicated client base because they deliver quality products, they deliver quality service. They don't chase corporate CTCs. They're not bothered. They are bothered about the fact that they're building their products, they're building their mental equity, they are being valued by people whom they work for, and those people are more than happy to pay them money. और वो पैसा धीरे 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 बढ़ता रहता है. और जो ये कॉर्पोरेट में काम करते हैं, ये 55, 50, 45 इस उम्र में बाहर आकर के काम करने लगते हैं. 10 साल करते हैं, 15 साल करते हैं, कॉर्पोरेट रिटायर कर देता है. आप अपनी चॉकलेट बनाना शुरू करते हैं 45 की उम्र में, मेजर स्पेशलिटी चॉकलेट. वो जब रिटायर होता है, आपकी चॉकलेट पीक पर पहुंच रही होती है, आप पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहे हो. यू हैव लर्न योर बिजनेस. शुरू में बहुत छोटा होगा, उसके बाद धीरे 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 यू कीप ऑन ग्रोइंग. So all these tier 2 cities, they give you that kind of a space. खर्चा आपने अपना कम कर लिया है, आप पे वो प्रेशर नहीं है. आप उस रैट रेस से, उस अननेसेसरी ओढ़े हुए बताए हुए कंपटीशन से बाहर आ गए. नाउ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड समथिंग, टू एक्चुअली फुलफिल व्हाट यू हैव बीन थिंकिंग टिल नाउ, व्हाट कैन बी डन, हाउ टू गो अबाउट इट. So there are a lot of work ideas which you can implement. There are a lot of work things you can do, which can be knowledge based, जो आपका खुद का inherent existing skill है. किसी से सीखना नहीं, जाना नहीं, समझना. आपको आता है, आपने इतने समय इतना काम किया है. You don't need any certificates for these things. All you need is start working. और ये आसान नहीं है. इट इज नॉट दैट यू आर नॉट गोना वर्क. ये मस्ती या मौज नहीं है. यू नीड अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ. आपको लगातार 8 घंटा 6 दिन, हफ्ते का 40 से 50 घंटा काम करना है. आपको अपने लिए उतना परिश्रम करके अपने आप को एस्टैब्लिश करना है. यू आर नॉट गेटिंग अ CTC, यू आर नॉट गेटिंग अ सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ विच इज अ फिक्स दिस थिंग, बट यू स्टिल हैव टू वर्क and start developing, start building on it. And that's the most difficult part. But if you are able to curb your ego and if you are able to stay disciplined, you will create a destiny जो आप बीकानेर ऐसे शहर में रह करके वो कर सकते हैं, जो
बॉम्बे में रह करके लोग गोल्डमैन सैक्स के साथ रह करके नहीं कर पाएंगे, एंड यू कैन डू इट, you definitely can do it. A lot of things. This is not an easy task, but this is where you will start finding your redemption. किसी से नहीं मांगना है, मेरे को आपसे नौकरी नहीं चाहिए, मैं तो ये कर सकता हूँ और मैं इतने लोगों के लिए कर, हर साल आपके क्लाइंट बेस आपके लिए बढ़ता रहेगा, हर साल आपको आपके प्रोडक्ट खरीदने वाले आपके लिए बढ़ते रहेंगे, आप नॉलेज बेस वर्क कर रहे हैं तो वो लोग आपके लिए। नेक्स्ट, हेल्थ इज वेल्थ। आप बाहर जाएंगे, आप द मोमेंट यू have time on your hands, the moment you are in a much more peaceful state of mind, the moment you are out of that unnecessary, unwanted competition, you have time for your physical health. Go start walking, start taking care of your diet, work in your communities. You'll suddenly find a lot of respect there. Go join a Rotary Club or a Lions Club or your RWAs in which you're there. Your mental engagement. So you are now not pressured by the cost of living. You are much more secure. You have started doing work where you're not going and asking, and you're not constantly insecure कि आज बॉस ने ये कह दिया, मुझे कल छुट्टी नहीं मिली, मेरा प्रमोशन होगा नहीं होगा, अप्रेजल होगा नहीं होगा, किसी की कोई गुंडागर्दी नहीं। मैं अच्छा काम करता हूँ, मैं 10 एडवोकेट्स को ड्राफ्टिंग करके देता हूँ, मैं 10 अकाउंटेंट्स को समझाता हूँ कि किस तरह से सर्विस ऑफिसर्स के क्या मसले होते हैं, या आप ये अकाउंट्स को देखिए, उनके केसेस में उनकी हेल्प कर देता हूँ, या मैं 10 बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं अपनी मेहनत करता हूँ, उनके 10th के अंदर उनके मार्क्स अच्छे आएंगे, अगले साल 10 के 12 आएंगे, उसके बाद 15 आएंगे, आपको किसी से कहीं कुछ कहने की जरूरत नहीं, यू आर इन अ मच मोर सिक्योर प्लेस mentally. Saturday, Sunday, you have time, you and your spouse go take care of yourself. You don't need to find alcohol to find solutions for your problems. Saturday, Sunday club जाएंगे शांति से, मेम साहब और आप will have your own socializing and drinks and but you are in a much more positive place. Your mental health is much better. Your physical health is much better. You're not under stress and you're not doing stress eating. You have time to go for a long walk, strength training. You're working from home. So you have everything which you want. Why? Because you have reduced your cost. You have started focusing on what you can do instead of trying to fulfill the charter for someone else, instead of trying to fulfill the charter for a profit seeking corporation. And the healthier you are, the longer you live, the better you live. Your life is better, your health is better, your overall strength is better, and there is vitality in what you're doing. Investments. This is something I'll talk about. Money is actually not the goal in itself. Money is a means to achieve what you want to do. Now, once you retire, you already have your pension. Commute. A lot of people have spoken about it. Unless until just one caveat, अगर आपकी pension taxable नहीं है तो maybe commuting may not be required. Otherwise, commute करें, जो एक मुश्त पैसा आता है उसको सेफली इन्वेस्ट करें, इतना इन्वेस्ट कर दें कि आपको 10 से 12% का रिटर्न हो जाए, फालतू का रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है। ज्यादा किसी की बातों में झांसों में आकर के बहुत ज्यादा मैं ये दिलवा दूंगा ना भाई, मेरा जो मेरे को मेरी 20-30 साल की कमाई का 1.25 करोड़ रुपया, मेरी उस मेहनत का, मेरी उस परेशानी का जो मिला है, वो प्रिंसिपली सेफ होना चाहिए, वो प्रिंसिपली सेफ है। मुझे 10 से 12% का ओवरऑल रिटर्न आ जाए। Overall return means this will include some kind of a capital appreciation of the corpus, so that you are never out of that corpus, and you can withdraw 5-6% of annual। मतलब अगर 1.25 करोड़ है तो लगभग महीने का 60-62 हज़ार रुपए का कैश फ्लो आप ले लीजिए, बाकी आपके कॉर्पस को ग्रो करने दीजिए ताकि वो हमेशा 1.25 करोड़ रहे, 1.5 करोड़ रहे। सो यू हैव योर पेंशन विच इज एनीथिंग फ्रॉम 75,000 to 1 lakh if after commuting। आपके कॉर्पस से आपको महीने का 60 से 75 हज़ार रुपए एडिशनली आता है, एंड दिस इज विदाउट यू टेकिंग रिस्क, without you getting unnecessary, aggressive or chancy, and your corpus 1.25 करोड़ है, उतना ही रहता है। एंड देन दी ओन वर्क विच यू स्टार्टेड, वहां से आपको एडिशनल 15-20 हज़ार रुपए आते हैं। ये 1.5 से 2 लाख रुपए का जुगाड़ हो गया। हिंदुस्तान में कोई भी टियर 2 सिटी ऐसा नहीं है जहां अगर आपका अपना घर है रहने का तो आप इतने पैसे में अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते बहुत इज्जत से, बहुत एडिक्वेटली।
and work with right kind of people who will keep your money safe. Don't go to all kind of financial advisors. Work with right kind of people. Work, and this is how you will be able to create that adequacy, that sufficient. I'll sum up, and this is where I'll take last 2 minutes. आपको कॉर्पोरेट जॉब एक्चुअल में चाहिए ही नहीं, इरिस्पेक्टिव ऑफ दी सैलरी, वो क्या देते हैं और वो कितना किस लिए चाहिए. यू आर ट्राइंग टू फाइंड योर वैलिडेशन फ्रॉम अ कॉर्पोरेट जॉब बिकॉज यू आर मेकिंग अ कंपैरिजन विद द पर्सन. 1,000 में से एक फौजी जिसने पता नहीं कुछ कर लिया, उससे आप अपना अपना कंपैरिजन कर रहे हैं. आपको उस कॉर्पोरेट जॉब के साथ साथ क्या मिलता है? उस कॉर्पोरेट जॉब के साथ साथ आपको स्ट्रेस मिलता है, आपको कम्यूटिंग मिलती है, आपको टाइम नहीं मिलता है. Now let's look at another comparison. 30-40 years इसके अलावा you're not in a corporate job. You have kind of understood this plan and started working on it. As compared to your peer who works in the corporate, what are you getting? You are now spending time on yourself. One, you're getting your health, which has been ignored. A lot of us are in Forge. A lot of us, in spite of being in Forge, have not been able to put time on our health. So you are getting your health. You will create and build something which will stay with you. The best of the corporate employee, the highest ranked corporate employee, the CEO of Tata Sons will retire at some age. Chief of Army Staff will retire at some age. The CDS will retire at some age. They will retire, you will not retire, because you are building something which is going to stay, whether you build at 45, 55, 60, whatever your age is. आप 90 साल जिए, 85 साल जिए, वो आपके साथ रहेगा अपने 20 साल, 25 साल, 30 साल. आप अपने लिए एक कुछ ऐसा क्रिएट करें जिसको आप ओन करते हैं. नो वन कैन रिटायर यू फ्रॉम देयर, नो वन कैन. सो ये आपका खुद का है. आप 15 से 25 हजार रुपए से स्टार्ट कीजिएगा, जो मेरा एस्टिमेट है, बिकॉज उतना आपको मिलेगा. You will develop something which is your own. You will develop a lot of dignity, and in the long run it is you who will going to be healthier, happier and even wealthier. Because जो कॉर्पोरेट वाले हैं, ये तो 60-65 में रिटायर हो जाएंगे. इनको अब काम मांगना आता नहीं, ये इनको शर्म आ रही होगी, क्योंकि पहले फौज में बड़े अफसर थे, बाहर आकर के इन्होंने कॉर्पोरेट में और अच्छे से नौकरी करी. अब इन्हें बाहर आकर के नॉर्मल लोगों से बातचीत करने में लगेगा, ये हम कैसे कर सकते हैं. आपने उस मेंटल बैरियर को क्रॉस कर लिया है. आपको गुड़गांव के गोल्फ कोर्स रोड पर घर पे रहने की जरूरत नहीं है. यू आर हैप्पी बीइंग इन अ स्मॉलर सिटी. सो यू हैव ऑलरेडी crossed or overcome those mental barriers, and now you are focusing on creating something which you have spent last 10-15 years, while this guy was running around fulfilling someone else's agenda for which the person was being paid a salary. उतने समय में तो आप क्रिएट करके खड़े हो. अब आपको इनमें से किसी की भी जरूरत नहीं. You are a very, very confident and self-created individual now. So the gist is, keep your costs low, invest your retirement corpus well, and in spite of all this, start saving. Save a lot of money. Why? Because plan to live for 100. God willing, आपकी इतनी लंबी लाइफ हो, इतना अच्छे से आप जिए, इतना आप सेहतमंद रहे, and build a life of meaning. So this was today's this thing. I'm going to stop the meeting. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on